Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan engineering and colleges and universities admission test. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. G. A non-empty set which is closed with respect to binary operation star is called a group if a non-empty set S which is closed with respect to binary operation star is called a group if G. भाई a non-empty set S which is closed जिसमें कली अल्लाह होल्ड करता है with respect to binary is called a group if the binary operation is associative. There exists identity element with respect to binary operation. There exists a unique inverse of each element of S with respect to binary operation, and all A, B, C hold. So by then your D option is correct. Your D option is correct. G. A non-empty set S is closed with respect to binary operation star is called a group if the number A1 A has the binary operation is associative. There exists identity element with respect to binary operation. There exists a unique inverse of each element of S with respect to binary operation. D option all A, B, C holds. So your D option is correct. Your D option is correct. G. A non-empty set S, एक non-empty set S है which is closed जिसमें अगली अल्लाह होल्ड करता है with respect to binary operation star is called a group if A condition है the binary operation is associative. B condition there exists identity element with respect to binary operation. C option there exists a unique inverse of each element of S with respect to binary operation. And your D option is all A, B, C hold. So भैया all A, B, C hold करेंगे तो your D option is your answer. Your correct answer is D, which is A, B, C. G. In a proposition, if P implies Q, then Q implies Q is called by in a proposition if P implies Q अगर P implies करेगा Q को then Q implies करेगा Q को is called by which option is correct. In a proposition if P implies Q then Q implies P is called which option is correct. In a proposition if P implies Q then Q implies Q is called. G. In a proposition if P implies Q then Q implies Q, Q is called converse of P implies Q is called converse of P implies Q. Your B option is correct. By if P implies Q then Q implies Q is called converse of P implies Q. भाई इसको क्या बोलेंगे converse of P implies Q. Your B option is correct. G. In a proposition if P implies Q then Q implies Q implies P is called converse of P implies Q. भाई इसको क्या बोलेंगे converse of P implies Q. In a proposition if P implies Q then Q implies P is called converse of P implies Q. भाई इसको क्या बोलेंगे converse of P implies Q. Your B option is correct. कहते हैं truth table consisting all false value is called G. Truth table consisting all false value is called आपने बताना which option is correct. G. Truth values containing all false value is called self contradiction. इसको क्या बोल रहे हैं self contradiction. But truth table containing all false values is called self contradiction. Your B option is correct. G. Truth table containing all false values is called self-contradiction. By truth table containing all false values is called उसको बोलेंगे self-contradiction. By truth table containing all false value is called self-contradiction. By truth table containing all false values is called self-contradiction. Your B option is correct. G. Truth table containing all true value is called by truth table containing all truth values is called tautology. भाई उसको क्या बोलेंगे जी tautology. भाई your A option is correct.
The truth table containing all values, all true values is called tautology. But your A option is correct. Truth table containing all true values. Truth table containing all true values is called tautology. उसको भाईजान क्या बोलेंगे? tautology. Truth table containing all true values is called tautology. G. In a proposition, if P implies Q, then contrapositive of this proposition is denoted by. भाई contrapositive of this is denoted by G. आपने बताना है कि which option is correct. By which option is G? Which option is positive? G. By in a proposition, if P implies Q, then contrapositive of this proposition is denoted by ये C option. Negation Q implies negation P. By contrapositive of negation Q implies negation P. Your C option is correct. But then ये याद करना है, in a contrapositive, in a proposition, if P implies Q, अगर P implies Q, then contrapositive of this proposition is denoted by negation Q implies negation PG. By negation Q implies negation PG. In a contrapositive, if P implies Q, then contrapositive of this proposition is denoted by negation Q implies negation P. D. In a proposition, if P implies Q, then contrapositive of this proposition is denoted by negation Q implies negation P. Your C option is correct. By in a proposition, if P implies Q, then contrapositive of this proposition is denoted by negation Q implies negation P. ये by definition है contrapositive की. Your C option is correct. G. In a proposition, if P implies Q, then inverse of this proposition is denoted by. भाई आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है जी. जी भाई in a proposition, if P implies Q, then inverse of this proposition is not by negation P implies negation Q. By is not by negation P implies negation Q. ये contrapositive की inverse की definition है. By in a proposition, if P implies Q, then inverse of this proposition is denoted by negation P implies negation Q. If P implies Q, then inverse of this proposition denoted by negation P implies negation Q. Your C option is correct. भाई ये आपने बताना कौन सा. If P implies Q, then inverse of this proposition is denoted by negation P implies negation Q. भाई इसको आपने वो क्या बोला? negation P implies negation Q. Your C option is correct. G. If this set A has P elements, if the set A has P elements, P के अंदर कितने elements? P. B has Q elements. भाई if set A has P elements, A के अंदर P elements हैं, and B has Q elements, और B के अंदर भाई कितने elements? Q. Then number of elements in A cross B is, आपने बताना A cross B number of elements होंगे वो P into Q होते हैं भैया. वो B option is correct. Your B option is correct. If the set A has P elements, A के अंदर P elements हैं, B has Q elements, B के अंदर Q elements हैं, then the number of elements in A cross B, भाई A cross B में जो elements होंगे वो क्या होंगे? P into Q. Your B option is correct. Your B option is correct. Your B option is correct. ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो P इंटू Q आएंगे. दोनों की जरूरत दे देंगे भाई. P एलिमेंट्स को भाई Q एलिमेंट के साथ जरूरत होगी तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे जी? P इंटू Q. योर B ऑप्शन इज करेक्ट. ये जबानी याद रखना आपने जी. इफ द सेट A हैज P एलिमेंट्स एंड B हैज Q एलिमेंट्स, number of elements in A cross B is P into Q. Your B option is correct. G. A में set elements X, set X is not equal to X itself, represents, भाई आपने बताना which option is correct. भाई which option is correct. G. भाई ये हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट X है और X is not equal to itself, अपने बराबर नहीं है. रिप्रेजेंट्स भैया वो क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा? खाली सेट को. भैया एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी. ए में एक सेट है जिसमें एलिमेंट एक्स है. एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इटसेल्फ, रिप्रेजेंट्स. भैया ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है. खाली सेट, एम्प्टी सेट. भाई ए एक सेट है उसमें एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इटसेल्फ. रिप्रेजेंट भैया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट को. वजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट को. Your C option is correct. Your C option is correct.
जी, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एम्प्टी सेट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला वजह खामन से तलाक मांगने वाली। बिला वजह खामन से तलाक मांगने वाली। जी, हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने बग़ैर किसी हर्ज और ज़रूरत के अपने खामन से तलाक का मुतालबा किया, जिस औरत ने बग़ैर किसी हर्ज और ज़रूरत के अपने खामन से तलाक का मुतालबा किया तो इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तो इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। जी, जिस औरत ने बग़ैर किसी हर्ज और ज़रूरत के अपने खामन से तलाक का मुतालबा किया तो इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। ये हदीस सनन अबी दाऊद में है जी, और हदीस नंबर है 2226 और जामिया सगीर में यह हदीस है 2706। जी, कुफ़ार मजलिस की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।